See, if you have a full-time job and you think you will beat the market, you're just being foolish. Forget intraday. Intraday is the sure shot of way of losing money. अगर तूने डाला इक्विटी मार्केट में पैसा और IRR 4% आया तो क्या करेगा? जब कोविड क्राइसिस हुआ था तब निफ्टी का 10 साल का रिटर्न, कैन यू गेस व्हाट वाज इट? 2%. Biggest investment is your career. It's like running your own company. Should you completely invest in equity? The answer is no. Probably you are gonna get married. It gives you thrill. It gives you adrenaline. So Ajinkya, after I have figured out my emergency funds, right? As you said, ideally you should have 6 to 12 months of emergency fund, and then you should have health and term insurance, and including top up of at least 50 lakhs as you suggested, right? To safeguard yourself from any catastrophic event. So what do you suggest as a next, what should I do as an individual, right? Yeah. Now you are covered. Now actually you should start about investing, right? And that's how you should now look at investing, right? Right. Now there is, I call it a bucket approach, right? Or you can call it goal-based investing, right? So whatever money you need in less than probably 5 years, definitely less than 3 years, that should be in your debt kind of portfolio. And these could be short-term goals. Probably you are going to get married, or you want to go to trip, you want to buy car, you want to pay down payment of your house, right? All these kind of expenses. So that should be in your debt. More than 10 years, definitely equity. I'll tell you a funny incident. One of my friend recently, because of this LinkedIn, I get a lot of such questions. He said, I want to retire by 45. I can invest this much. So, therefore, I need an IRR of 13%. तो मेरा sorted हो जाएगा. I can retire by age of 45. तो अब बता मैं कहाँ करूँ? I said, अगर तूने डाला इक्विटी मार्केट में पैसा और IRR 4% आया, तो क्या करेगा? तेरे हाथ में नहीं है मार्केट, राइट? सो रादर देन लुकिंग एट कि कितने IRR चाहिए, उससे अच्छा वो टाइम होराइजन देखो. सो 10 साल के ऊपर अगर होराइजन है तो इक्विटी में डालना चाहिए. 10 साल के 3 साल के नीचे 3-5 साल के नीचे तो डेट में होना चाहिए. But I just wanted to understand, like going in very fundamentals, like what is the difference between debt investment and equity investment? If you could please help. Yeah. Sure. So when you invest in equity, you are owning a piece of business. So owning a piece of business is risky. It can go down, it can go up. Upside is high, downside is high, right? When you invest in debt, the downside is generally on the lower side because you're basically giving a loan to a business. So business will first repay the loan, then only equity at some value, right? So very simple कि equity में आप business own कर रहे हो, debt में आप business को loan दे रहे हो. कुछ उसमें, if you can share a few examples, like what are the types of debt instruments and what are the type of equity instruments? Yeah. Yes, debt में mainly bonds होते हैं, right? Bond. So जब एक business को debt raise करना है, they can raise it through bond. And ये mixture of bonds जो या bouquet of bond होता है, वो debt mutual fund में होता है. So these are all debt mutual funds. जैसे इक्विटी में स्टॉक्स होता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, वैसे ही डेट में बॉन्ड होता है और डेट म्यूचुअल फंड होता है. एंड लाइक जनरली पीपल से इफ यू आर इन योर 20s और अर्ली 30s, you should, your portfolio, right, your investment portfolio should primarily be in equity, and you should have very less into debt because you have a lot of life ahead and you should have more in equity. So just wanted to understand, like, why do you think we should have some capital in debt as well? Yeah, no, there is definitely merit to that. Right. So, if you are very young, your debt allocation should be less. It should not be zero. Okay. Right. The reason is, you might theoretically, if you have less than 3-year plan, you will have it in debt. But let's say if you don't have any plan of, if any goal in next 3 years or 5 years, should you completely invest in equity? The answer is no. So diversification is very important, right? You never know how the equity market is going to behave. And secondly, you might start thinking ki I need to have a car. Like right. If you look at 4 years back, everybody in Bangalore thought Ola Uber तो मिलता ही है, कार करने की जरूरत नहीं है. Correct. Like if you look at today, it's very hard to get Ola and Uber. Right? Correct. You got to have your own car. Right. Or two-wheeler or something, right? So therefore ऐसी कुछ नीड आएगी कि वैकेशन पे जाने की इच्छा हो जाएगी, शादी होने की चांस हो जाएंगे. इसके लिए आपको कुछ तो, यू कैन नॉट डिपेंड एवरीथिंग ऑन इमरजेंसी. इमरजेंसी इज ट्रू इमरजेंसी. राइट. इमरजेंसी के बाद कुछ डेट में एलोकेशन होना चाहिए. राइट. वो छोटा हो सकता है,
बट वो कुछ तो होना चाहिए. अगर गोल है तो ज़्यादा भी हो सकता है. राइट. इसलिए डेट में एलोकेशन होना चाहिए. राइट. राइट. एंड इक्विटी एज अ एसेट क्लास इज ग्रेट फॉर वेल्थ क्रिएशन. राइट. बट उसमें ना एज रिस्क काफ़ी होते हैं. राइट. So therefore you cannot dip into that anytime. You really need to have long term vision, right? In fact, to the extent मैं बोलता हूँ कि आपका गोल अगर 5 साल से कम है तो इक्विटी से भी उठा के पैसा डेट में डालना चाहिए. Got it. राइट. जब कोविड क्राइसिस हुआ था, राइट, तो जब मार्केट गिरा था, करेक्ट, तब निफ्टी का 10 साल का रिटर्न, राइट, व्हाट कैन यू गेस व्हाट वाज इट? XIRR less than 10%? 2%. 2%. Wow. For that period of time. For 10 years. Wow. Fortunately it recovered, but it was not in your control, right? Right. So if you had allocated full in equity, Yes. you would have made 2%, and debt में you would have made at least 8-10%. इसलिए मतलब you need to diversify well and you need to stick to asset allocation. So now very insightful, Ajinkya. So now moving to equity, right? So just want to understand in detail, right? I mean, I've seen my friends when we started out career, and even today, right? A lot of people get into investing in stocks, and many of them get into trading as well, which is intraday trading, right? So wanted to understand, when it comes to equity, what are the types of instruments that any individual should focus on, and any suggestions on why people get into stocks very early, and what's your take on that? Yeah. See, if you have a full-time job, you should not do stock picking. Okay. There are enough data, emotional reasons, rational reason, data-backed reason, all indicate to one thing. If you have full-time job, don't do stock investing, right? Forget intraday. Intraday is the sure shot of way of losing money, in my opinion, right? Problem with stock picking is, like, you are basically saying, I will beat the market. And like, there are so many forces in the market, so many capable people, even they can't beat the market. So if you are doing full-time job and then doing this and you think you will beat the market, you are just being foolish. Even for the long term? Yeah, even for the long term. Wow. Very clear. Second, what people don't understand in stock picking is that bandwidth is coming from somewhere. Correct. So either you could have used that time to focus on your career and grow your career. Like if you look at like Nifty का return कितना होगा? 10, 15, 12%? Correct. 15 max, right? अगर आप किसी बंदे की करियर ग्रोथ में देखोगे, बंदा बंदी मेल फीमेल जो, Yes. उसका सैलरी ग्रोथ का अगर मैं ग्राफ देखूँ, जो ढंग से फोकस करके करेगा वो 20-25 ही होगा, एंड वो परमानेंट है, राइट? निफ्टी आज ऊपर है बट वो कल नीचे आ सकता है. सैलरी बढ़ती तो कम नहीं होती जनरली नहीं होता. एंड तुम सैलरी बढ़ती है तो स्किल सेट भी बढ़ते हो, तुम अपने करियर में एडवांस भी करते हो तुम ये. सो मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ, द बिगेस्ट एसेट और बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज योर करियर. इट्स लाइक रनिंग योर ओन कंपनी. द थिंग इज पीपल गो फॉर स्टॉक ट्रेडिंग, इट गिव्स यू थ्रिल, इट गिव्स यू एड्रेलिन. Then I've seen that people I know who consciously do stock trading, but they do it with very little money, and they're cognizant ki this is for fun, this is for thrill. Yeah. If you do that, if you have that clear expectation, then that's okay. But most of people can't bifurcate between that line of investment and fun, and they end up losing money. Like if I come to equity mutual funds, as you discussed, right? So what's your like, I mean, there are multiple types of mutual funds, right? Yeah. So if you can give some more insights on like how should I go about? So let's understand equity mutual fund, right? तो उसमें एक दो तीन बाइफर्केशन होते हैं. एक तो एक्टिव एंड पैसिव. राइट. पैसिव मतलब क्या है कि बेसिकली इट सेज कि ये टॉप 50 कंपनीज है, ये टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे. बिल्कुल. देयर इज नो मैनेजर एज सच. वो कंपनी ऊपर जाएगी तो आपका फंड ऊपर जाएगा, अगर वो कंपनी नहीं जाएगी तो आपका फंड नहीं जाएगा. सो दैट इज पैसिव. एक्टिव मतलब देयर इज सम फंड मैनेजर विच इज टेकिंग कॉल कि तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है एक्टिव में. मतलब ही विल से कि मेरे को इस कंपनी में डालना है, इस कंपनी में नहीं डालना है. दैट इज एक्टिव पैसिव. सेकेंड इज बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, राइट? टॉप 100 लार्ज कैप में आती है, देन नेक्स्ट 150 जो आती है, 101 to 250 वो मिड कैप आती है, एंड 251 to 500 स्मॉल कैप में आती है. तो ये कैटेगरी फोकस्ड होते हैं. लार्ज कैप फंड होते हैं, मिड कैप फंड होते हैं, ये होते हैं. जो डेटा हमने देखा है उसमें जो पैसिव फंड होते हैं लार्ज कैप में, दे बीट एक्टिव फंड्स हैंड्स डाउन. वाओ. तो लार्ज कैप में पैसिव में ही करना चाहिए. तो आपका मेजॉरिटी पोर्टफोलियो क्या है इन इक्विटी जो एलोकेशन है
उसका मेजॉरिटी लार्ज कैप में हो सकता है, कुछ मिड कैप में हो सकता है और थोड़ा स्मॉल कैप में हो सकता है, रिस्क के बेसिस पे. अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. बट फॉर लार्ज एंड मिड इंडेक्स फंड्स आर मोर देन इनफ. बट देयर इज वन मोर डिफरेंस इन म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट एंड रेगुलर. Correct. Right. So in direct mutual fund, the distributor doesn't get any commission. Right. In regular mutual fund, distributor gets any commission, and this commission is generally on a higher side. Right. Right. So if you are picking, if you are gonna just take to index fund, don't invest in regular mutual fund. That's the next thing. Like, how should I go about having my allocation in large, mid, and small cap funds? And when should I invest in small cap and when should I invest in mid cap? If you can give some insights on that. हाँ देखो, मतलब जनरली थंब रूल ये होता है, लार्ज से मिड कैप में रिटर्न ज़्यादा बढ़ सकता है, रिस्क ज़्यादा बढ़ता है. राइट. मिड से अगेन आप जब स्मॉल कैप में आते हो, रिटर्न का पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ता है बट रिस्क भी ज़्यादा बढ़ता है. द थिंग इज व्हेन यू गो फॉर सच ऑप्शंस, राइट, यू आर डेफिनेटली टेकिंग हायर रिस्क. रिटर्न मिलेंगे कि नहीं वो तो फ्यूचर में पता चलेगा. रिस्क तो आज ही आप आज ही ले रहे हो. तो एलोकेशन हेवीली स्मॉल कैप लार्ज कैप में होना चाहिए. फिर अगर एंड ये सब पे ना, मतलब ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये थोड़ा एडवाइजरी साइड जाएगा जहाँ पर्सन टू पर्सन अलग अलग होगा. राइट. तो मतलब मेजॉरिटी आपका इक्विटी एलोकेशन लार्ज कैप में होना चाहिए, फिर थोड़ा मिड कैप में हो सकता है. बट जब तक पोर्टफोलियो साइजेबल नहीं तो स्मॉल कैप में जाना ही नहीं चाहिए. एक तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी कुछ इशू आते हैं. तो इन स्मॉल कैप तो पैसिव इज नॉट डेफिनेटली वे टू गो. राइट. उसमें एक्टिव जा सकते हो, बट वो कौन सा फंड आउट परफॉर्म करेगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. करेक्ट. राइट. एंड जब तक आपका पोर्टफोलियो साइजेबल नहीं है ना, तो आप उसकी अपसाइड इतनी ज़्यादा नहीं है बट डाउन साइड काफ़ी ज़्यादा है. तो अनलेस योर पोर्टफोलियो इज रियली रियली बिग, 50 लाख के नीचे अगर पोर्टफोलियो है तो यू नीड नॉट इवन think of small caps. I think just to summarize the whole discussion, right? You spoke about having money invested in debt instruments like FD or debt mutual funds, and then you spoke about investing in equity, where you suggested not to focus. If you are an individual, if you have a full-time job, you should focus on upskilling yourself and growing yourself in your career. Just focus on investing in index funds. They give you 12% return, which is amazing. So better to do that. And once you reach above 50 lakhs worth of overall wealth, including your debt and equity, you can start thinking about investing in small cap mutual funds as well. So thank you so much, Ajinkya. No, my pleasure. This was a wonderful session, and very thankful to Ajinkya for joining us. In the next episode, we will be covering the basics of tax planning and a lot more on personal finance. Thank you so much.